Hello students, in this video we will discuss about equation of rotational motion, torque and angular moment. So what is the equation of rotational motion? As we know that the equation in linear motion is equals to V is equals to U plus AT and S is equals to UT plus half AT square and V square is equals to U square plus 2AS, where U is the initial velocity, V is the final velocity, A is acceleration and T is time, and S is the distance traveled in time T. So similarly, we can define equation of rotational motion by using equation of linear motion. In the equation of rotational motion, we replace final velocity by omega, initial velocity by omega naught, acceleration by alpha, and time z, and on the place of linear displacement or linear distance, we use angular displacement theta. So our first rotational equation of motion is omega is equals to omega naught plus alpha t. Second, theta is equals to omega naught t plus half alpha t square. And third equation of motion is omega square is equals to omega naught square plus 2 alpha theta, where omega naught is initial velocity, omega is final velocity, theta is the angular displacement, and alpha is the angular acceleration. Clear? And t is time. So these are the equation of rotational motion. Now we discuss torque. So what is torque? Torque is also known as moment of force. Torque को बेटा हम क्या बोलते हैं? Moment of force. Moment of force means जिस एक्सिस के अबाउट फोर्स अप्लाई हो रहा है उस एक्सिस से उस फोर्स का डिस्टेंस और इनटू फोर्स इज नोन एज मोमेंट ऑफ फोर्स. सो इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द लाइन ऑफ रोटेशन. दिस मीन्स अगर हमारे पास एक पार्टिकल है P और आपने इस पर फोर्स अप्लाई किया है F, इसको रोटेट कराने के लिए, बिकॉज हम लोग रोटेशनल मोशन में वर्क कर रहे हैं, तो आपने इस पार्टिकल को रोटेट कराने के लिए आपने इस पर एक फोर्स अप्लाई किया है. जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, अगर मुझे इसको रोटेट कराना हो तो मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से इस पर एक फोर्स अप्लाई करता हूँ ऐसे. क्लियर? तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा है, इस एक्सिस के अबाउट. ये जो एक्सिस आप इस तरीके से इससे पास आउट होगी इस कॉर्नर से, इसके अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा है. क्लियर? तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. फोर्स जिस पॉइंट पे अप्लाई हो रहा है और जिस एक्सिस पॉइंट से एक्सिस पास आउट होती है उसके बीच में जो डिस्टेंस है ये वो है, और फोर्स आपने क्या अप्लाई की है F. तो दिस मींस ये डिस्टेंस कितना है बेटा R, और ये डिस्टेंस कितना है, ये फोर्स कितना है F. देन टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस. दिस मींस टॉर्क इज इक्वल्स टू F क्रॉस R या F इनटू R. ठीक है? टॉर्क है तो इसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है? इन वेक्टर फॉर्म, बिकॉज टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो इन वेक्टर फॉर्म टॉ वेक्टर इज इक्वल्स टू R क्रॉस F. So torque is also defined as the vector product of R vector and F vector is known as torque, and magnitude of torque is equals to RF sin theta, because थर्ड चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि A क्रॉस B is equals to AB sin theta. So torque is equals to R क्रॉस F and tau is equals to R sin theta. Now unit of torque, because unit of force is Newton and unit of distance is meter. So unit of torque is Newton meter. This is the unit of torque, and dimension of torque is, dimension of Newton is mlt minus 2, mlt minus 2, and dimension of length is L. So net dimension is ml2t minus 2. So this is the dimension of torque. Clear? Next, angular momentum. So what is the angular momentum? It is defined as the moment of linear momentum अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन. एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट जो लीनियर मोमेंटम का मोमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगुलर मोमेंटम. इसके लिए भी हम लोग कंसीडर करते हैं एक पार्टिकल P इन एक्स वाई प्लेन, और इसका जो लीनियर मोमेंटम है वो बेटा कितना है P, और ओरिजिन के रिस्पेक्ट में दिस मींस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट जो इसका पोजीशन वेक्टर है कितने R. देन लीनियर मोमेंटम इज गिवन एज L इज इक्वल्स टू R क्रॉस P, बिकॉज लीनियर मोमेंटम को हम L कैपिटल L वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं. दिस मींस L वेक्टर इज इक्वल्स टू R क्रॉस P, और मैग्नीट्यूड ऑफ L इज इक्वल्स टू RP साइन थीटा. क्लियर?
and unit of angular momentum, unit of r meter and unit of p mass into velocity. This means kg meter per second. So kg meter per second into meter. So unit of linear momentum is kg meter square per second. Clear? And dimension of angular momentum is m L2 t minus 1. This is the dimension of angular momentum. Clear? In both torque and angular momentum, the direction of torque and angular momentum can be found by using right hand rule. Clear? Right hand rule. Clear? Now we discuss about relation between torque and angular momentum. So to find the relation between torque and angular momentum, let us consider to find the relation between torque and angular momentum, we consider that relation between torque and angular momentum. Relation between torque and angular momentum. Clear na? So we know that torque can be given as torque is equals to R cross F. Equation first. And angular momentum L vector is equals to R cross P. Equation second. This is angular momentum and this is torque, tau. Clear? And we know that P is equals to mv. So differentiate equation second with respect to t. Differentiate equation second with respect to t. We have dl by dt is equals to d by dt of r cross p. D by dt of r cross p. Here we use product rule. So differentiation of first function and second function as it is plus differentiation of first function as it is and differentiation of second function. Clear now? So dl upon dt is equals to dr upon dt means velocity v, and we know that p is equals to mv plus r, and by using Newton's second law, according to which the rate of change of linear momentum is equals to force. So this means dp upon dt is equals to f. So dl upon dt is equals to m and v cross p because m is a constant plus r cross f. Here v cross v, we know that vv sin theta and angle between v vector and v vector is 0. So sin 0 is equals to 0. This means this factor is equals to 0. So dl upon dt is equals to r cross f, and r cross f is nothing. R cross f is torque. So dl by dt is equal to torque. So this is the relation between angular momentum and torque. So rate of change of angular momentum is equals to the applied torque. So rate of change of angular momentum is equals to the applied torque. Is equals to the applied torque. So this is the relation between torque and angular momentum. Now we discussed about conservation of angular momentum. Clear? Conservation of angular momentum. So what is the conservation of angular momentum? Conservation of angular momentum. So our next topic is conservation of angular momentum. So conservation of angular momentum. Clear? So
So for this we know that relation between angular momentum and torque. We know that dl vector upon dt is equal to torque. Equation first. If net torque acting on an object is zero, if net torque acting on an object is zero, then dl upon dt is equals to zero. But because dl upon dt is equals to zero means L is equals to constant. So what is the conservation of linear momentum? It says that if the net torque acting on an object is zero, this means tau is equals to zero, then the angular momentum of the object remains conserved, ठीक है, or remains constant. This is the conservation of angular momentum.